Hello children, welcome to the digital classes of Christ Church Convent School Gadawara. I am Amit Toshniwal. This video is for class 12th. Subject is accountancy. Today we shall study chapter number 5, retirement or death of a partner. Part 1. You are seeing that it is written 4 at the top, number 4, but in new book you will find number 5 because NPO is considered chapter number 1. Okay, so retirement or death of a partner. So let us know the meaning of retirement. When an existing partner leaves a partnership firm for any reason, then it is termed as retirement from partnership. Okay? Retirement means to make ourselves away from that job, to quit it, to leave it. So there may be any reason of leaving. Okay, so a retirement and death, they are considered normally same. Why? Because if a partner demises, then automatically he is no more partner of the firm, as it happens in retirement. Okay, so we can conclude it. Separation of a partner from the partnership business is called retirement of partner. After the retirement, partnership is reconstituted if the remaining partner longing to continue the business. Okay. If the conditions of retirement have already been agreed to by the partners and have been laid down in the partnership deed, then a partner can retire from the partnership on those conditions after the consent of other partners. So what does it mean? It means that to take the retirement from the firm, there should be two clauses, two conditions. First, either it is pre-mentioned in partnership deed, उसमें भी ये लिखा होना चाहिए, means what are the conditions of retirement, or else by the consent of other remaining partners, one partner can take retirement from the firm. Okay, so what are the causes of retirement of partner? This is an important question and normally it comes for 4 marks. You have to remember the points. First point is old age, बूढ़ा हो गया है. Second, incapability of a partner, somehow he is incapable either physically or mentally. Mutual dispute, आपस में झगड़ा हो चुका है. He desires to enter into another business, leaving the first one. Mental sickness of a partner, not working properly, he becomes abnormal. Then insolvency of a partner. Insolvency means कंगाल हो गया है, दिवालिया हो गया है. Continuous loss in the partnership firm and he is not willing to bear or suffer more loss in future and he wants to be retired, or else he wants to start his own business or any other reason for which partner does not want to continue. So they may be the grounds. Apart from these, there may be other grounds also: family problems, health problem, social problem, what economic problem, his financial conditions are not allowing him to work more. So there may be many reasons. These reasons are not certified कि नहीं यही होगा तभी वो पार्टनरशिप से रिटायर होगा. No,
not at all. Okay, so retirement can be taken for any ground which does not suitable for partner who wants to be retired. Now the next term is expulsion. Expulsion means भगा देना, निकाल देना. तो निकाला कब जा सकेगा उसको? तो these two terms are different. Retirement and expulsion, they are different. If any partner is committing actions against the provision of deed or against the interest of firm, so he can be expelled from the partnership firm as per the section 33(1) of Indian Partnership Act 1932. Naturally, सीधी सी बात है ना कि whatever was agreement, he is not working as per agreement, or else he is doing anti-firm work, एंटी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, तो उसको फर्म में क्यों रखेंगे भाई? बोलते ना कि बाहर के दुश्मन से घर का दोस्त जो गद्दार हो गया वो ज़्यादा खतरनाक होता है. तो नेचुरली उसको एक्सपेल किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, है कि नहीं? बट फॉर दिस it is necessary to give him a written notice to whom means to whom to be expelled. उसको नोटिस देना पड़ेगा, so that the person who is being terminated or expelled may know why he is being terminated, why he is being thrown out of the firm, and that expulsion should be with good spirit and in the favor of firm's interest. Okay, so expulsion is never meant to retirement. ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है. लेकिन जब जब उसको निकल जाना होगा, एक्सपल्शन हो जाएगा, तो उसका मतलब हुआ कि वो जा रहा है, फर्म को छोड़कर जा रहा है. somehow he is leaving the firm. So that's why the accounting process will be almost same as retirement. Okay, now you see legal position of a retiring partner. You are seeing on your screen legal position. अब जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो वो क्या क्या लेके जाएगा भैया? जो कुछ उसने लगाया था वो और जो उसने कमाया था वो उसको लेकर जाना है. तो जो लगाया था मतलब क्या? द कैपिटल दैट ही इन्वेस्टेड इनटू द फर्म, सो ही विल टेक अवे दैट कैपिटल. देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उसने पूरी ज़िंदगी वहाँ काम किया, तो वॉट एवर ही earned and kept with the firm, so that is called accumulated profit. And general reserves made for different provisions, तो वो भी उस पर भी उसका अधिकार है, वो भी लेके जाएगा. हाँ, and whatever share of profit he has to receive till he was in the firm, he was associated with the firm, so that profit also will be taken. Okay, so this is the main right, legal position of retiring partner. Moreover, by the date he leaves the firm, he is not responsible for any activity or any transaction done by the remaining partners for the firm. He shall not be liable. There will not be any responsibility of retiring partner from the date he is retiring. This is second more important point. Third is retiring partner
or the executor of deceased one. Deceased means expired. Demise, disease, expire, death हो जाना, these all are same. So retiring partner or the executor of deceased partner is entitled to get all the capital, goodwill, share of goodwill, undistributed profit and reserve. Okay? Then he is liable for any liabilities up to the date of retiring, not after that, and he will not have any right over the assets of the firm now. Okay, so these are the main important points regarding legal position of the retiring partner. Now you see on your screen, you are seeing big heading, accounting regarding retirement of a partner या accounting problems. अब क्या होगा, एक सीधी सी बात है, किसी आदमी के घर से चले जाने से कुछ समस्याएं होती हैं और किसी नए आ जाने के से भी होती है, जैसे एडमिशन के समय होती हैं, है ना, तो वैसे ही किसी के चले जाने पे होगी। यदि कोई एक नया मेंबर फैमिली के साथ एसोसिएट होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, जिसको हम व्यवस्थाएं कहते हैं, अरेंजमेंट्स कहते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा ही सब कुछ होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे, रिटायरमेंट या डेथ हो जाने पे, तो कुछ ना कुछ तो होगा, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी जो बाकी के मेंबर्स में बटेंगी, बाकी के पार्टनर्स के बीच में आएंगी, और जब वो रिटायर होगा अपने आप को अलग कर लेगा तो जो कुछ भी उसका होगा हिस्सा, शेयर, वो सब लेके चला जाएगा। सो दैट विल अफेक्ट कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, वर्किंग कैपिटल, स्टेटस, असेट्स एक्सेट्रा ऑल्सो इन द सेम ईयर एज वेल इन द कमिंग सक्सेसिव ईयर्स। उसमें भी ये सब होगा, होगा कि नहीं? तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी स्क्रीन पे देखो। पहली बात है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हम आपको 3rd चैप्टर में बता चुके हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के दौरान, कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सबसे पहला और अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है दैट इज़ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, सेकंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ करना होगा, क्योंकि वो अपना हिस्सा मांगेगा, नेचुरल सी बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। डिवीजन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व, फिर देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर एंड मेथड ऑफ पेइंग रीपेमेंट, उसको किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा ये भी पहले से डिसाइड होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस में आएगा। कैसे पेमेंट किया जाएगा, मतलब बाय विच मेथड ही विल बी पेड द अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब कैसे पे हो सकता है, आइदर लम सम, जिस दिन जा रहा है अपना पैसा उठाओ निकलो यहाँ से पूरा पैसा ले जाओ। सेकंड मेथड हो सकती है इंस्टॉलमेंट, दैट इंस्टॉलमेंट कैन बी मेड फॉर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, लाइक दैट। थर्ड मेथड हो सकती है एन्युटी मेथड, मतलब ईयरली। So that too has to be decided beforehand whether the amount will be given on the very first day of the year or at the end of year, ये भी उसको डिसाइड उस समय होगा। तो ये अकाउंटिंग प्रॉब्लम होती है, मेथड को देखना पड़ता है कौन सी मेथड का यूज़ होगा, सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, ये प्रॉब्लम्स उस समय आती हैं। अब आप स्क्रीन पे देखो आप अपनी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। पहला पॉइंट देखो, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इट इज़ अज्यूम्ड दैट रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर ओल्ड रेशियो। नहीं दिया मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं बदला, एज इट इज़ है, कहाँ से निकालोगे तुम, नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर यदि वो अनलाइक फ्रैक्शन में है तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन, ये अपन पहले भी कर चुके हैं एडमिशन वगैरह में, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ यू सी इलस्ट्रेशन नंबर 1,
there are three partners XYZ, they are sharing their profit ratio 4:3:2. We have to find new ratio in three cases. When X retires, so we will leave X share ratio, that is 4. So remaining ratio or new ratio will be 3:2. When Y retires, we will leave Y's ratio, then ratio remains 4:2, that comes to 2:1. And in the case of Z retiring, the remaining ratio is 4:3, that only will be considered as new ratio. Okay. So second case is when remaining partners receive the share of retiring partner in some specific ratio, then the share of the outgoing partner is divided in that ratio only. So this ratio is also gaining ratio of the continuing partner, and when we need to calculate this, so gaining ratio has to be added to the old ratio of old partners. Okay, for this you can have a glance of illustration number 2. Amit, Sumit and Vineet share profit and losses in the ratio 6:3. Amit retires from the business and Sumit and Vineet purchases share equally. So what was Amit's share? Amit's share was 6/14, and it is being taken over by the other two partners Sumit and Vineet equally. Equally means half part by each. That is why 6/14 multiplied by half, it comes to 3/14. So 3/14 will be added to remaining partners old ratio to get the new ratio of old partners. So see, Sumit's old ratio was 5/14, added to 3/14, it comes to 8/14. Vineet's old ratio is 3/14, again 3/14 is added, gaining ratio, it comes to 6/14. So when divided, it comes to 3:7. So new ratio is 4:3. Okay, so now you solve some of the questions based on it, then we shall continue with some new topics in next video. Okay, thank you.